India aspires to become the startup capital of the world in the years ahead. We can collaborate with Israel to promote our own startup ecosystem, aspiring to take it to the levels of deep tech and high quality innovation. It was indeed a very momentous occasion when we signed the terms of reference with Israel for a balanced, equitable and fair agreement between Israel and India to develop our mutual economies for prosperity and the future. One of the elements is going to be technology and innovation in our comprehensive partnership with Israel. Today I had the privilege of visiting the Simon Peres Center of Innovation to understand how such a small nation could come up with such big innovations. And I am very impressed with the way they have converted adversity into opportunity, the way they have played at the interface between their defense requirements, their agriculture requirements, and modern technology for health and climate change. I believe we can collaborate with Israel to promote our own startup ecosystem, aspiring to take it to the levels of deep tech and high quality innovation at competitive prices, given the economies of scale that India has to offer. We are looking at a deep partnership with Israel, who has one startup for every 1,000 people in their population. India aspires to become the startup capital of the world in the years ahead. Sir, here some companies are on display like Checkpoint or some technology companies, cybersecurity biggest companies. You met yesterday the CEOs of this company. How they are going to collaborate with the Indian companies? There's a lot of excitement in Israel amongst the startups, amongst their innovators and businesses to work with India, a country which provides scale, a country which provides opportunities for the future. And I do think that whether it is cybersecurity, whether it's mobility, whether it's action against climate change problems like producing steel with less carbon, or it is the medtech devices sector, I think India and Israel can work together, can partner together, and innovation will find purpose, innovation will find scale, innovation will become the new way of working and living tomorrow. Sir, are we looking at some kind of startup exchange program between the countries? We have just entered into the ToR yesterday. Now we'll look at all the different elements, and one of the elements could be a startup bridge between Israel and India. सर ऐसे वक्त में जब भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं, इंडिया और इजराइल मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इनोवेशन इजराइल का जो है वो कैसे भारत के काम आ सकता है? इजराइल ने दर्शाया है कि नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट किस प्रकार से छोटे से देश को बड़े महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा कर सकता है। इनको जब अपने राष्ट्र की सुरक्षा की समस्याएं थीं, तब उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ नवाचार को स्वास्थ्य के साथ मिलाया, नवाचार को पर्यावरण के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ मिलाया, और ड्यूअल यूज, जो एक ही नवाचार युद्ध में भी काम आ सके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और सामान्य मानवी के रोजमर्रा की जीवन में बदलाव ला सके। इसका जो मिलन इजराइल में देखने को मिलता है वो वास्तव में बड़ा लाजवाब है, बड़ा प्रोत्साहित करता है। और इसीलिए भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो मिलकर
इस नवाचार को बहुत बड़े रूप में विश्व स्तरीय ताकत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम उम्मीद करें कि डिफेंस सेक्टर का जहां तक सवाल है, इंडिया और इजराइल का कोलैबोरेशन आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है? हमारा कोलैबोरेशन इजराइल के साथ हर क्षेत्र में बढ़ेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो इनोवेशन नवाचार हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो विश्व शांति के लिए जिस प्रकार से हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, हर वो तकलीफ जो विश्व के सामने है उसमें मिलकर हम पहल कर सकते हैं, मिलकर एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।